Good morning, dear students. I, Vidyasagar, welcome you all in the e-learning class of Modern International Kurswa. Today, I am going to start subject Geography of Standard 8, and this is on Chapter 5, Industries. Dear students, as we have discussed, that how the different industries they have a lot of benefits to us, but in spite of all these, some of the disaster also take place whenever these industrial place these incidents is being taken place in such areas where moreover the crowd is there, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा crowd होता है. Now distribution of major industries. Now the world major industries, जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज हैं लाइक आयरन एंड स्टील. एज यू नो दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज दिस इज नोन एज बैकबोन. इसे क्या बोला जाता है? बैकबोन. एज इंडस्ट्रीज द टेक्सटाइल एंड आईटी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गए, आईटी इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आर ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल टेक्नोलॉजी आईटी इज द न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज. आयरन स्टील जो है ये वेरी ओल्ड, and like in different countries like USA, China, Japan, Russia, these all basically these are industries where the iron and steel industry this is act as a supporting industries. ये industries जो हैं वो इन जगह पे एक supporting industries की तरह काम कर रहे हैं. ओके, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अब इस बात पे भी डिपेंड करता है दैट वेयर दिस इंडस्ट्रीज विल गेट देयर रॉ मटेरियल, दोज रॉ मटेरियल्स विच इज यूज्ड एज इनपुट. ओके, जो इनपुट के रूप में जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी सबसे ज़्यादा उपलब्धता अवेलेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है. इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन दैट. वो ये भी चीज़ भी जो है उस पर डिपेंड करता है. फर्दर एज the Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan, the major hubs of IT like the Silicon Valley of the California and Bangalore region of India. यानी कि बैंगलोर रीजन और कैलिफोर्निया जो कि कहाँ अमेरिका में है, ये क्या हो गया कि आपका सिलिकॉन वैली हो गया. अब कहेंगे सिलिकॉन वैली क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो आईसी चिप होता है वो सिलिकॉन का ही बना होता है. ओके, और इसी इन जगहों पे जो आईटी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा वृहद पैमाने पे इट इज़ इन अ लार्ज एरियाज, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली. ओके, नाउ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. एज आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द रॉ मटेरियल्स like the coal, limestone, iron ore, along with the इसके साथ साथ क्या चाहिए? तो लेबर, कैपिटल, साइट, वाटर रिसोर्सेज एंड इट ऑल्सो इंक्लूड विद द प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड फर्दर प्रोसेस एंड देन आउटपुट. ओके, एज इन दिस प्रोसेस इसी क्रम में जो है लाइक द रॉ मटेरियल इज पुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस, जिसे हम लोग वात्य भट्टी कहते हैं. जो बहुत बड़ा सा एक गर्म भट्टी होता है उसी में सारे रॉ मटेरियल्स को डाला जाता है, पिघलाया जाता है, फिर उसमें से आयरन मेल्ट करके जो है वो क्या होता है? मेल्टिंग फॉर्म में निकलता है और उसे अलग अलग शेप देकर आयरन बनाया जाता है. Nowadays the use of steel has already increased. स्टील का जो यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी क्रम में जो है हम देखते हैं कि स्टील दैट इज़ बेसिकली टफ. ये जो है आज के ज़माने में हमारे आज का जो इन एवरीथिंग्स लाइक आवर पॉट्स इन किचन एंड लाइक द डिफरेंट थिंग्स like in our automobiles, different things, the steel has been taken its place. So in formation of that, इसके बनाने में जो है वो अगर कुछ इसमें से
दूसरे मेटल्स को डाल दिया जाए लाइक द एल्युमिनियम, निकल, कॉपर, तो ये क्या हो जाता है, इससे हार्डनेस मिल जाती है, टफनेस, और क्या हो जाता है कि रेसिस्ट, जो जो आप कह सकते हैं कि जिंक है ना, जो जिंक जो का परत जो चढ़ जाता है आयरन के ऊपर, वो भी इस पर नहीं होता है, एक रेसिस्टिविटी आ जाती है। ओके, कहते हैं कि स्टील इज ऑफन द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और एज वी नो that iron and steel both are considered as the backbone of the industries. So the almost the things is either made of iron and steel. Yes, it is true. Wherever each and everything, you see the fan, you see the almirah, you see the your electricity board, each and everything, wherever you will touch, you will see each and everything is made up of iron or steel. So like the ship, train, trucks and autos, these all are here. So and the pin also, even the safety pin, these are also made up of iron or steels. Now the oil wells drills with the steel machineries, like the oil drilling machines, these are from the oceanic waters, these also contain of the steel machineries. Steel pipeline transport oils, minerals, these are mined with the steel equipments. Okay, so the farm machines as well as the farm machines, these also require the steels. Okay, like some of the farming activities, these are also the steel has been taken place there, and large buildings, they also have the steel framework. Okay, like you consider that the different type of ceilings, the steel is there. Okay, so here what we have understood, that steel nowadays, steel that have been taken the places. Now in before 1800 AD, the iron steel industry was located in the place where raw materials, power supply, running water were easily available at that places. Late the ideal location for industry was near coalfields. Okay, it means as according to situation, that if we will set out our industries in such areas where we have to put a large sum of money on our transport, then the production cost it will hike, production cost जो है वो बढ़ जाएगा. That's why the industries is located in such place that we could get the raw materials easily, हमें raw materials easily मिल सके, and that's why it is reallocated in such places. Okay, now that after 1915, iron and steel industries began to locate on large area on flat land near seaports. Okay, for the transportation, as we know that the seaports, these all the cargos, it's provide the cheaper transport. Okay, so these all industries were also being set up in the near the ports. Okay, now as because the iron and steel products, it became very heavy, and that's why it required the cheaper mode of transport. That's why it could transport it from one place to another place. Okay, now in India, iron steel industries, it was developed, because the raw material, cheap labor, transport, all it was available here. The steel producing states, factory industries, it was located in such area where the raw materials like the coal, limestones, cheap labor, it was, as well as the water resource was available there. Like these of the places, the Vilai, Durgapur, Burnpur, okay, Jamshedpur, Raurkela, take the place of north and the eastern, northeast, Maharashtra, Pune belt. Okay, now the Vijayanagar in Karnataka, then Vishakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem, Tamil Nadu, and other industries center. These all set up in such places where these resources are available easily. Okay, dear students, read the paragraph and keep watching. Thank you.